Hello everyone, welcome to my YouTube channel Learning Tamang. My name is Ankit Tamang and I've started this small YouTube channel जहाँ पे मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट वीडियोस एक्सप्लेनर वीडियोस बनाऊंगा जिसके थ्रू आई विल एक्सप्लेन सम ऑफ द कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एंड जनरल अवेयरनेस related to finance and economics again. So my aim is that why not learn and share things, right? So whenever I learn something and I try to understand it, I wish that कोई चीज एक easier explanation से हो जाए या कुछ animations के through हो जाए that would help us better understand things. So this is my initiative where I'm trying to explain, make videos where I'm explaining things in a very simple terms uh, using various examples, but also capturing all the essence of every topic. So today what we are covering is that we are going through fixed income securities topic. So basically, fixed income securities are bonds that we generally know. Uh, this can be helpful for all the people interested in learning what is bond, what is fixed income securities, and also particularly I have taken all the content from the NISM book that is also helpful for NISM certification, which is a SEBI established institution where you can go and uh, take the exam and take certification for fixed income securities. So if you are preparing for that also, an ISM certificate for fixed income, so this video can be a helpful session for you. So let's rightly jump into it. So यहाँ पे हम देखेंगे जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है we'll be looking at fixed income. We'll be talking about the role of the debt market, and then we'll be moving on the importance of debt market, what is the importance, and then we'll be moving on to the bond market ecosystem, and then role of regulators, and then role of credit rating agencies, and also we'll be talking about role of monetary policy in debt market and how the debt market has evolved, and also the market dynamics of debt market. So the first topic is let's talk about what is debt in general. When we talk about fixed income securities, generally it is a debt. What is a debt? Debt is simply a concept जिसमें मैं ये कहता हूँ कि I owe you, in which the receiver of the favor person is receiving a favor, जिसके रिटर्न उस फेवर के रिटर्न में he is going to give a agreed rate of return to the issuer of the favor, right? So इस ये थोड़ा सा बुकिश टर्म हो गया, इसको यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करेंगे विद एन एग्जांपल. सपोज यू वांट टू बाय अ बाइक. आपको एक बाइक खरीदनी है बट यू डोंट हैव द मनी फॉर इट राइट नाउ. So you think that you will approach a friend of yours, right, and ask the money from him. But he is also thinking that what he will gain by giving this money to you. Okay, so he is also thinking to have some extra benefit by borrowing you the money, right? So what he will do, he will give you the 100 rupees for the bike you need, but he says that okay, I want in return rate, I want some extra money because I borrowed you. So you take that money after a specified time. मुझे वो एक extra money उसके साथ दे दो. So for example, आपने 100 लिया उनसे, and then you are returning plus 10. So यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, जो 100 है यहाँ पे, that is the principal amount जो आपने borrow किया, and then when you are returning the amount, एक rate of interest के साथ आप उनको वापस दे रहे हो. So this 10 is the rate of return. So this in a simple term how debt works. So moving on, यहाँ पे दूसरा टॉपिक है रोल ऑफ डेट. सो रोल ऑफ डेट मार्केट क्या है? नॉर्मली व्हेन firm needs to finance its day to day activity. एक फर्म को अपने वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए डेली अपने बिजनेस चलाने के लिए उनको फाइनेंस चाहिए होता है.
So they can take finance from equity as well, right? But why do not they do it? Because in equity, you are basically raising money by selling ownership, the interest in the company, where you are also letting out some of the decision making in the hands of the shareholders, right? But in that, it is it is not a transfer of ownership where the ownership is not diluted, but you take the money and you repay the money with some interest. So that is called debt. So that's why debt is a very helpful instrument for firms that are looking into uh, not to dilute their ownership, but again to raise their finance for day to day. Also, similarly, हम जब बात करते हैं डेट के बारे में, not only जो फाइनेंस होता है वो यहाँ पे बस बिजनेस ही नहीं करते हैं या प्राइवेट कंपनीज ही नहीं करते, इवन गवर्नमेंट आल्सो बोरोज बिकॉज you may think that why does government needs to borrow, right? But government will take a lot of public expenditures, maybe some development, infrastructure development, or for any development in the society. So for that, government also borrows so they can finance spending for the development of the society and the country. And exactly same, they will give some interest to the investors and the maturity and the amount, principal amount back, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं फिक्स इनकम सिक्योरिटीज का जो प्रोसेस रहता है, जो एक्चुअल प्रोसेस रहता है वो कैसे फ्लो करता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इशू डेट। सो द बॉन्ड इज बेसिकली a paper where all the details are written, that is issued and given to the गिवन टू इन्वेस्टर्स। एंड उस बॉन्ड में सारा डिटेल लिखा होता है जिसको हम इंडेंचर कहते हैं। तो वहां पे सारा डिटेल होता है कि व्हेन इज द मैच्योरिटी डेट, व्हाट इज द इंटरेस्ट दैट यू विल गिव, यू विल गेट एट अ रेगुलर इंटरवल टाइम, राइट? तो यहाँ पे हम प्रोसेस को देखते हैं। जैसे इशू डेट यहाँ पे कह रहा है, इशू डेट में इन्वेस्टर पेज द प्रिंसिपल अमाउंट टू द इशूअर इन द एक्सचेंज ऑफ द बॉन्ड। सो यहाँ पे अगेन क्या हो रहा है कि इन्वेस्टर जो कर रहा है वो बोरो कर रहा है, वो सॉरी लेंड कर रहा है मनी टू द इन्वेस्टर। सो द इन्वेस्टर कैन बी अ फर्म और कैन बी अ गवर्नमेंट एज वेल। सो उसके उसके बदले द मनी प्रिंसिपल अमाउंट दैट द इन्वेस्टर इज गिविंग, उसके बदले यहाँ पे बॉन्ड जो इंडेंचर है, बॉन्ड बॉन्ड जो है उन्हें इश्यू हो रहे हैं। देन यहाँ पे इश्यूअर, जैसे मैंने बताया कि आपको उसके रिटर्न में आप फ्री के मनी तो दे नहीं रहे हो। ऑब्वियसली यू विल नॉट गिव एनी फ्री मनी, राइट? यू आर इन्वेस्टिंग फॉर एनी इंटरेस्ट, राइट? एनी रिटर्न इन योर इन्वेस्टमेंट। सो द रिटर्न इन द इन्वेस्टमेंट हियर इज योर फिक्स रेगुलर कूपन। लाइक हम बात करते हैं इक्विटी में, अगर आप बात कर रहे हो क्यों इन्वेस्ट करते हो, तो मार्केट एप्रिसिएशन के लिए आप इन्वेस्ट करते हो। जैसे कि इक्विटी का प्राइस जो है, आप एक इक्विटी शेयर लेते हो तो कल को वो बढ़ रहा है, उसका प्राइस बढ़ रहा है, 10x 20x हो रहा है, देन यू आर अर्निंग फ्रॉम द रिटर्न फ्रॉम द कैपिटल एप्रिसिएशन, राइट? बट यहाँ पे बॉन्ड मार्केट में व्हाट द रिटर्न यू आर गेटिंग इज दैट यहाँ पे जो इशूअर है वो एक रेगुलर इंटरेस्ट कूपन पेमेंट वो यहाँ पे पे करते हैं। एंड जो जो यहाँ पे टिल द मैच्योरिटी, ये एक रेगुलर इंटरवल में आपको कूपन, कूपन मींस इन इंटरेस्ट, व्हाटएवर इंटरेस्ट यू आर गेटिंग, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म टू रिमेंबर। तो ये चीज आपको यहाँ पे रिसीव हो रहा है। देन मेच्योरिटी पे क्या हो जाता है कि द बॉन्ड एक्सपायर्स, मींस इन अ जनरल टर्म, इन अ सिंपल टर्म यू से दैट द लोन हैज एक्सपायर्ड, राइट? द लोन हैज गॉटन एक्सपायर्ड। अब यहाँ पे आपको जो फुल प्रिंसिपल पेमेंट है, जो आपने 100 रुपीज जो लिया था आपके दोस्त से, वो आप वापस कर रहे हो। मतलब कि जो 100 रुपीज है वो जो जो एंड ऑफ द पीरियड है जो भी बॉन्ड का, कि इस डेट में आपका जो बॉन्ड है वो खत्म हो जाता है, उस बॉन्ड, उस एंड डेट पे आपको एज ए इन्वेस्टर पूरा मनी वापस मिल जाता है। ओके? एंड वैसे भी आपको जो इतना कूपन है, जो इंटरेस्ट है, वो आपको रेगुलरली मिल रहा है, राइट? Moving on, role of debt market. So, what is the role and the importance of a debt market? Okay, so lot of firms and as well as government also depends upon debt market to fund their expenses. And debt market is a very cheap, a lower borrowing cost, so that
यहाँ पे जो गवर्नमेंट है फर्म से वो यहाँ पे बोरो कर सकते हैं एट अ वेरी लो बोरोइंग कॉस्ट, राइट। और यहाँ पे जो डेट है, जो डेट मार्केट है, can be funded through bank loans and bond issues with corporate markets offering cheaper rates, right? And then यहाँ पे हम बात करते हैं कि developed market reduce reliance on banks and improve asset liability management. So यहाँ पे क्या होता है कि जैसे बहुत सारे बॉन्ड्स इशू होते हैं, बहुत सारे कंपनीज बॉन्ड्स को इशू करते हैं, एंड ये बॉन्ड्स जो होते हैं वो ट्रेडेड होते हैं इन द मार्केट। पहले प्राइमरी मार्केट में ट्रेड होते हैं, देन सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड होते हैं। हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि ओनर ऑफ जो ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इन द बॉन्ड्स, ये भी होता है कि आज आपके पास बॉन्ड है तो आपको कूपन पेमेंट मिल रहा है, आपको प्रिंसिपल पेमेंट मिलेगा। कल कोई और खरीद रहा है तो उनको बॉन्ड मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिलायंस ऑन बैंक है फॉर लोन, इट इज गेटिंग डिडक्टेड, राइट। और यहाँ पे और जो एसेट एंड लाइबिलिटी मैनेजमेंट भी है थ्रू बॉन्ड मार्केट, इट इज गेटिंग एफिशिएंट हियर। तो यहाँ पे बात करते हैं कि दे कलेक्टिवली इन्वेस्ट, दे फैसिलिटेट कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम्स एंड अट्रैक्ट रिटेल इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट डायरेक्टली इन। तो यहाँ पे क्या है कि नॉर्मली mutual funds, pension funds, and all, they they are the collective investment schemes, and they take the money from the retail investors and they invest. So indirectly यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनके पैसे भी यहाँ पे डेट मार्केट में जा रहे हैं, एंड विथ with avoiding the risks that is in equity market, they're investing in that market, right? देन यहाँ पे हम मूव ऑन करते हैं प्राइमरी मार्केट, द नेक्स्ट पॉइंट। प्राइमरी मार्केट्स अनेबल डायरेक्ट इश्योरेंस ऑफ सिक्योरिटी व्हाइल secondary market provides liquidity and price discovery. So basically what we are talking about here is debt market. Debt market में भी equity market जैसा ही secondary primary market and secondary market होता है। So primary market में क्या होता है कि द प्राइमरी मार्केट में गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने जो बॉन्ड्स है वो इशू करते हैं थ्रू ऑक्शंस, ठीक है, जो फर्स्ट टाइम इशुएंस हो रहा है। देन यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी जो अपना फर्स्ट टाइम इशुएंस करते हैं, सेल सिक्योरिटीज, जो अपने सिक्योरिटीज को बॉन्ड्स को सेल करते हैं वो थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं। सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको रिमेम्बर करना है आपको कि गवर्नमेंट जो है यहाँ पे डेट इशू करते हैं थ्रू ऑक्शंस, एंड सिक्योर एंड कंपनीज जो फर्म्स है वो यहाँ पे अपने सिक्योरिटीज, फिक्स इनकम सिक्योरिटीज सेल करते हैं थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, एंड दैट हैपेंस इन प्राइमरी मार्केट, द फर्स्ट मार्केट, राइट। वी आर टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट मार्केट। जो प्राइमरी मार्केट में यहाँ पे डायरेक्ट इशुएंस ऑफ सिक्योरिटीज होता है, एंड देन व्हेन इट इज traded in the secondary market, so secondary market में यहाँ पे they provide liquidity as there is buyers and sellers, and secondary market में क्या होता है कि आप उसको buy and sell कर सकते हो consecutively as per the demand of the buyers and the sellers in the market, ठीक है। और उसके कारण एक fair pricing भी of that जो इंस्ट्रूमेंट है उसके कारण हो जाता है इन द सेकेंडरी, राइट। एंड देन यहाँ पे हम बात करते हैं सेकेंडरी डेट मार्केट प्रोवाइड्स एन एग्जिट राउट फॉर इन्वेस्टर्स एंड ऑफर वैल्यूएबल प्राइस डिस्कवरी इंफॉर्मेशन। सो सपोज आपने अगर एक 10 ईयर बॉन्ड खरीदा है फ्रॉम गवर्नमेंट, राइट। सो देन सेकेंडरी आप एज अ बॉन्ड आपने जो खरीदा है, नाउ यू कैन नॉट आस्क बिफोर द मैच्योरिटी दैट आई वांट माय इंटरेस्ट एंड रिटर्न्स बैक। बट यहाँ पे सेकेंडरी मार्केट में जब एक बॉन्ड ट्रेड होता है, then you can just sell in the secondary market and you get your money back, right? You get your investment back, and that becomes an exit route for the investors in the secondary market, and also help them decide that what is the fair price of the bond that they are holding, ठीक है। अगर आपको ये पता चलता है कि आपका जो बॉन्ड है, आपने जो इन्वेस्ट किया हुआ है उसका जो फेयर वैल्यू है, और सॉरी जो मार्केट में जो वैल्यू है वो फेयर नहीं है, so it means that your investment is not going to the right place, right? So you want to exit, so you can sell the right time in the secondary market, right? But issuance involves steps like underwriting, credit rating, and require a robust legal framework. Obviously, when public issuance involved, when public is involved, there are a lot of regulatory systems, and in likewise in
security equity market, we see there is a lot of regulations by SEBI. Similarly happens in the debt market by RBI and SEBI, and there are underwritings on credit ratings, most important credit rating of the instruments, uh, and a lot of legal requirement in the debt market, right? Moving on towards the बॉन्ड मार्केट इकोसिस्टम, बात करते हैं यहाँ पे जो बॉन्ड मार्केट कैसे फॉर्म होता है, उनके इकोसिस्टम्स में कितने सारे पार्टिसिपेंट्स और कितने सारे फंक्शनरीज होते हैं. सो बेसिकली देयर आर थ्री इम्पोर्टेंट फंक्शनरीज. यहाँ पे पहले हम बात करते हैं इशूअर्स के बारे में. ठीक है, इशूअर्स यहाँ पे आर दोज हु आर इशूइंग द बॉन्ड्स. मींस इट मींस दैट कि इशू कौन कर रहा है बॉन्ड, जिनको फाइनेंसिंग चाहिए. सो अगर आप इक्विटी के टर्म्स में समझो, तो एक इक्विटी शेयर इश्यू कौन करता है? तो कंपनी करता है. क्यों करता है? क्योंकि उसको पैसे चाहिए होते हैं और उस पैसे के बदले दे गिव shares of their company. So similarly, here issuers issue करते हैं bond to get finance, get investments from the investors. ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं जो issuers है वो गवर्नमेंट्स है, कमर्शियल बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर कंपनीज है एंड प्राइवेट कंपनी सेक्टर्स है, राइट. यहाँ पे फिर कुछ इंटरमीडिएटरीज भी होते हैं. इंटरमीडिएटरीज का काम क्या है यहाँ पे? कि वो हेल्प करते हैं जो इशूअर्स है, जो भी इशूअर्स जैसे गवर्नमेंट, कमर्शियल बैंक्स एंड पब्लिक एंड प्राइवेट फर्म्स है, उनको यहाँ पे दे हेल्प देम टू सेल देयर बॉन्ड्स टू द इन्वेस्टर्स, राइट. सो यहाँ पे इंटरमीडियरीज है, इन्वेस्टर्स, इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक्स है. ठीक है. देन यहाँ पे थर्ड फंक्शनरी के बारे में बात करते हैं. यहाँ पे इन्वेस्टर्स है. सो इन्वेस्टर्स यहाँ पे कौन कौन होते हैं? इन्वेस्टर्स आर प्राइवेट कॉर्पोरेट ट्रेजरीज, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट व्हीकल्स लाइक म्यूचुअल फंड्स कलेक्टिवली फंड्स उठाते हैं एंड दे इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स लाइक दैट. एंड इंश्योरेंस कंपनीज, कमर्शियल बैंक्स, pension funds, high net worth individuals, etc. And investors can be further classified as domestic and international investors as well. So जैसे कि हम बात करते हैं इक्विटी मार्केट में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, तो यहाँ डेट मार्केट में भी यहाँ पे डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स होते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स एज वेल होते हैं. तो यहाँ पे फर्दर हम डिस्कस करते हैं कि कैसे एक बॉन्ड इशुएंस का प्रोसेस होता है, राइट. बॉन्ड इशू का कैसे प्रोसेस होता है, तो ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस इज द प्रोसेस. सो यहाँ पे एक इशूअर होता है, बी इट गवर्नमेंट और अ गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ प्राइवेट सेक्टर कंपनी, राइट. तो यहाँ पे जो इशूअर दे इशू सॉरी यहाँ पे जो इशूअर है वो इशू करता है थ्रू इंटरमीडिएटरी, राइट. एंड इंटरमीडिएटर आर मर्चेंट बैंकर्स एंड इन्वेस्टमेंट. सो यहाँ पे बट इशू करने से पहले यहाँ पे दे हैव टू गो थ्रू क्रेडिट स्कोरिंग बाय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी. ठीक है. सो दे हैव टू गेट अ क्रेडिट स्कोर फ्रॉम द क्रेडिट रेटिंग एजेंसी, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि क्रेडिट रेटिंग क्यों? बिकॉज एक बॉन्ड है, एक इशूअर इशू कर रहा है, तो कल को ये वो बोल सकता है, एक इशूअर बोल सकता है कि I am not paying your money back. I am not paying you the interest, right? So it is a very risky thing that you are giving a money, a loan, to some institution, and in return you are not getting your money back, right? So in such case, how do you know that this investment is a good investment in the bond market, and this is a good fixed income security, right? So there is various credit rating agencies who rate such instruments accordingly, and they say that okay, this is a triple A bond and a very good uh, 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 ratings they have, and this security is a very good security where the risk is less, right? So ऐसे यहाँ पे एक क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रेट करते हैं different instruments issued by a issuer, right? So once they get ratings, and then they can issue through an intermediary, and they can sell the bond to the investors. So the investors are basically institutional investors and
high network individuals, right? HNI is high network individuals. So institutional investors, जब हम बात करें, what is an institutional investor? Institutional investors is a collective investment scheme funds like pension funds, insurance company. These are examples of institutional buyers. Similarly, यहाँ पे हम बात करते हैं intermediaries. हमने बोल तो दिया कि जैसे merchant bankers and investment bankers. So these are an institution which gives financial services while raising money. कोई भी एक कंपनी को अगर मनी रेज करना है और एनी फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक मर्जर एंड एक्विजिशंस होता है, उसमें एक फाइनेंशियल सर्विस चाहिए होता है. सो मर्चेंट बैंकर्स एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प दीज फर्म्स. सो सिमिलरली जब बॉन्ड मार्केट में भी इशू होते हैं बॉन्ड्स, सो इशूअर को हेल्प करने के लिए टू सेल दोज इंस्ट्रूमेंट्स to the investors, intermediaries help them to sell those securities to investors and HNIs, right? Then moving on towards the next thing, यहाँ पे हमने पढ़ा कि जो प्रोसेस हमने यहाँ पे पढ़ा, बट यहाँ पे हम बॉन्ड मार्केट के जो स्ट्रक्चर है उसको भी समझ लेते हैं यहाँ पे. सो बेसिकली दीज आर द यहाँ पे मेंशन किया है कि मार्केट सेगमेंट कैसे डिवाइड किया है. यहाँ पे सॉवरेन इशूअर्स है, ठीक है. Sovereign issuers is simply nothing, is government. Sovereign means government. So government, be it a state government here or be it a central government, be it a state government, those are called sovereign issuers, means government issued. So government issued instruments रहते हैं. So these are the instruments that we will discuss later on, right? And then the second segment is public sector. Public sectors are the government companies, like the issuers involves government agencies and state bodies, PSUs, public sector units, undertakings, commercial banks, and financial institutions. So these are under public sector, right? And then we talk about private sector. So private sectors are private banks, corporates. They also issue fixed income securities, right? So these are the three segments we talked about. Sovereign issue means government issue, public sector, and private sector. Right. So now we talk about the role of regulator in debt market. अब तो हमने अभी तक हमने ये बात किया है कि how does the what is a debt, what is how it is issued, and who are the issuers, right? Now we will talk about what is the role of a regulator in a debt market. So basically RBI ज्यादातर यहाँ पे मैनेज करता है जो भी borrowings of central government, state government, including union territories, right? So these are the borrowings that the RBI regulate, and also they are the regulator for the money market and government security markets. So यहाँ पे जो मनी मार्केट सेगमेंट है एंड जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट है उसको यहाँ पे रेगुलेट करने के लिए आरबीआई है. बट व्हेन वी टॉक अबाउट एनी कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू, सो द कॉर्पोरेट बॉन्ड इशू आर रेगुलेटेड बाय सेबी, दैट इज सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे दोनों सेगमेंट को यहाँ पे दो अलग अलग रेगुलेटर यहाँ पे रेगुलेट कर रहे हैं. सो यहाँ पे फर्दर यहाँ पे बताया गया है कि also, SEBI regulates the issues or the instruments issued by the commercial banks and public sector units undertakings, provided such issuance by the regulated entities are more than 1 year of maturity. So यहाँ पे वो corporate bond market को regulate करते भी है, but they also regulate the commercial bank and public sector instruments that are of maturity more than 1 year, right? एंड वहीं पे आरबीआई ने हमने बात की है कि आरबीआई दे एक्ट एज अ दे मैनेजेस द बोरोइंग ऑफ द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड द यूनियन टेरिटरी एंड आल्सो एक्ट एज अ रेगुलेटर फॉर द मनी मार्केट एंड द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज मार्केट. So this was the overview of the debt market, and this is just the part one, and part two will be coming soon. So stay tuned, and thank you for viewing this video, and do like and subscribe.